Hi, today we'll start part 2 power resources from geography class 8. Let's start now. Power or energy is increasing for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources categorized as conventional resources and non-conventional resources. मीन्स औद्योगिक, कृषि, परिवहन, संचार और रक्षा के लिए बिजली या ऊर्जा की आवश्यकता है। विद्युत संसाधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है जैसे पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन। लेट मी टेल अबाउट द कन्वेंशनल रिसोर्सेज। Conventional resources of energy are those sources which have been in common use for a long time is called conventional resources of energy. Like firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. Means वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे जलाऊ लकड़ी और जीवाश्म ईंधन दो मुख्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। Firewood is widely used for cooking and heating. In India, more than 50% of the energy used by villagers comes from firewood and fossil fuels. It is a remain of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Coal, petroleum and natural gases are the fossil fuels which are the main sources of conventional energy. इसका मतलब यह व्यापक रूप से खाना पकाने और गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का 50% से अधिक जलाऊ लकड़ी से आता है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे हुए थे गर्मी और दबाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है जो पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। लेट मी टॉक अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels are in limited quantities and the rate at which the growing world population is consuming them in far greater than a rate of their formation. Let's talk about the coal. Coal is most abundantly found fossil fuels. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. मतलब कोयला सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। इनका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा और इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले से निकलने वाली बिजली को तापीय शक्ति कहते हैं। Producers of coal in the world are China, America, Germany, Russia, South Africa and France. And producer of coal in India are Jharkhand, Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro. Now we'll talk about the petroleum. Petroleum is a thick black liquid. It is found between the layers of rocks and drilled from oil field located in offshore and coastal areas. Then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. Producers of petroleum in the world are Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, USA, Russia, Venezuela and Algeria. In India, Digboi in Assam, Mumbai High in Mumbai and the delta of Krishna and Godavari rivers. इसका मतलब पेट्रोलियम एक गाढ़ा काला तरल है।
यह चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है और अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से ड्रिल किया जाता है। इसके बाद इसे रिफाइनरियों को भेज दिया जाता है, जो कच्चे तेल को संसाधित करती है और डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करती है। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव को काला सोना कहा जाता है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। Let's talk about natural gas. It is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Producers in the world are Russia, Norway, UK, and Netherlands. And in India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura, and some areas of shore in Mumbai. I hope you have got it. Let's talk about the hydroelectric power. Rainwater or river water stored in dam is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blade placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity, which is called hydroelectricity. इसका मतलब बांधों में जमा बारिश का पानी या नदी का पानी ऊंचाई से गिरने के लिए बनाया जाता है। बांध के नीचे स्थित टरबाइन ब्लेड पर बांध के अंदर पाइप के माध्यम से गिरता है। चलने वाले ब्लेड फिर बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर को चालू करते हैं, जिसे जल विद्युत कहते हैं। Then after the water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydropower. I hope you got it. Let's see advantage and disadvantage of hydroelectric power. The advantages of hydroelectric power are: it is renewable resources of energy. The generated electricity is cheap and it causes limited pollution. Let's see the disadvantages. Dams are expensive to build, and second point is sometimes it becomes major reason for flooding and earthquake, and third is electricity can't be stored once produced. Let's talk about the nuclear energy. Let's talk about non-conventional resources of energy. Do you know why we need to use non-conventional resources of energy? That because of the increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the resources of this fuel will get exhausted, and also it causes environment pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources. I think I have explained it so easy way that no need to explain in Hindi. So let's talk about the nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurs radioactivity elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. मतलब परमाणु शक्ति यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये ईंधन परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन से गुजरते हैं और शक्ति का उत्सर्जन करते हैं। Did you understand? Let's proceed. Solar energy. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panel to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefit a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers,
solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. मतलब सूर्य से फंसी सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इनमें से कई सेलों को ताप और प्रकाश के उद्देश्य से बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों में जोड़ा जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक बहुत सारे उष्णकटिबंधीय देशों को लाभान्वित करती है जो प्रचुर मात्रा में सूर्य की चमक से उत्पन्न है। सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर में भी किया जाता है। इसके अलावा सामुदायिक प्रकाश तथा यातायात संकेतों के लिए भी उपयोग किया जाता है। मेरे विचार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। Now I'll explain about the wind energy. The high-speed wind rotates the windmills which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal region and in mountain passes where strong and steady wind blows. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain. मतलब तेज़ गति वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती है जो बिजली पैदा करने के लिए एक जनरेटर से जुड़ी होती है। ऐसी पवन चक्कियों के समूह वाले पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय दर्रों में स्थित है जहां तेज और स्थिर हवाएं चलती है। You can read the advantages and disadvantages of wind energy that's given in the notes. Now we'll talk about the geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. Means पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान लगातार बढ़ते जाता है। कभी कभी यह ऊष्मा ऊर्जा स्वयं गर्म झरनों के रूप में सतह पर आ सकता है। इस ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। कई वर्षों से गर्म पानी के झरनों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने और स्नान करने के लिए किया जाता है। Let's talk about the tidal energy. Energy generated from tides are called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. And the producer of tidal energy in the world are Russia, France and Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. Now the last, biogas of the non-conventional resources of energy. Organic waste such as dead plants and animals material, animals dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel that is called biogas. You know very well that the organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manures each year. Means जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और पशु सामग्री, पशु गोबर और रसोई के कचरे को बायोगैस नामक गैसीय ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोगैस डाइजेस्टर में बैक्टीरिया द्वारा जैविक कचरे को बायोगैस उत्सर्जित करने के लिए विघटित किया जाता है जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और रोशनी के लिए एक उत्कृष्ट ईंधन है और हर साल भारी मात्रा में
जैविक खाद का उत्पादन करती है। There are few points for conservation of minerals and natural resources. Efficient utilization of resources, improvement in the technique of extraction and purification. Next is recycling of resources and saving mines from collapsing and use of alternative energy resources. Implementing above step could conservation of minerals and power resources will ensure a better economy for future generation. I hope you have understood this chapter, and please subscribe it if you like it, then please give a comment to me. Thank you for watching.